Alaikum student. Hope everyone doing well. MashaAllah. Allah Tabarak Taala. May Allah bless you, every one of you, good health, happiness. Amen. So this is lecture 6, and in previous lecture we have learned some important infectious diseases. If you remember, these are the rabies, AIDS, dengue, swine flu, etc. And now in today's lecture, we will learn the non-infectious diseases. We will see its concept यानी कि definition and the different non-infectious diseases. So let's see. Now today's lecture is on non-infectious diseases. It is also called as non-communicable diseases or also known as non-contagious diseases. The disease, we will see the definition of the non-infectious diseases, then afterward we will see the different non-infectious diseases. So let's see first the definition. The non-infectious disease, it is completely opposite than the infectious disease. We can simply define it as a disease which did not occur by touching or by sharing the things of the deceased person. But in a biology we have to define it in a proper manner. So let's see the definition of non-infectious diseases. Disease which do not occur through infections and body contact are called as a non-infectious diseases, which means वो बीमारी या वो डिसीज़ जो किसी के टच करने से या किसी के स्पिटिंग के थ्रू or by sharing the deceased person things didn't occur. Such diseases arise in human body itself due to the certain reason. If you remember that class or the types of diseases, you will see that the infectious and non-infectious diseases classified into on the basis of the reason, and it is one of the disease which is according to the reason, and it is comes in the acquired disease. The second type is acquired disease, which I have already explained. Acquired means which we gain in our life, जो हमको अपनी लाइफ में मिलती है, तो it is one of the acquired diseases. So non-infectious diseases arise in human body itself due to the certain reasons. So reason are so many, कुछ भी reason हो सकता है, but these non-infectious diseases mostly comes after an age, after 50 age. Non-infectious disease जो रहती है वो after 50 एज के बाद हमको होना शुरू होती है, बिकॉज द बॉडीज ऑर्गन becomes slower in a function, and due to different reason, by gaining the weight, put on weight, by the not proper diet, so body doing work slowly. That's why we gain it in after an age. But there are so many reason of this diseases, like consumption of junk food, consumption of tobacco, smoking. These are the main reason of gaining this disease in our life. So hope you understood the definition. Non-infectious diseases, which we simply say the disease which did not occur through the touching or by sharing the thing with a deceased person, is known as a infectious diseases. So see the different infectious diseases. See the picture here showing the different non-infectious diseases, and also called as a non-infectious disease, non-communicable and non-contagious. Okay, so these are cancer, chronic lung diseases, means जो lung की disease है, it is also comes in the non-infectious. Other non-infectious or non-communicable, NCD means the non-communicable diseases. Diabetes is one of the non-infectious diseases. Then heart diseases comes in that non-infectious diseases. And causes of the non-communicable diseases, so many reasons. I already told you that mostly the non-infectious disease happen after an age.
50, 70 और 60 क्रॉस करने के बाद these diseases happen to a person if we are not taking a proper diet, if we are not doing a proper exercise, so it can be happen. So the causes are the unhealthy diet, smoking, physical inactivity. So when a person become an aged, so it's working getting slow, काम करना कम हो जाता है, वर्किंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो भी वर्किंग करना स्लो हो जाते हैं, उनका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है. दैट्स वाई दिस डिसीज हैपन टू द particular person. So this is all about the non-infectious disease. So on this all the disease we will see in a detail, like cancer, diabetes, heart diseases. Those are the non-infectious diseases we will see in a detail means we have to see their reason, their definition, their symptoms, and their the diagnosis. Okay, now let's see. First one is cancer. We well known the about the cancer, and we have heard so many times that particular person have the cancer, that particular lady have a cancer, that particular person have a mouth cancer. So many times we hear this. So cancer means what? Actually cancer is we can say it is a forming a lumps in a body. Lumps matlab LUMP, that means गांठ, or a forming of a group of a cell is a cancer. But we have a particular definition of the cancer. So cancer is an uncontrolled and abnormal growth of a cell. Cancer means what? It is a uncontrolled and abnormal growth of a cell. Or we can also say when cellular reproduction goes out of a control, it is called as a cancer. So see the definition here. Uncontrolled and abnormal cell growth is called as a cancer. You know the cell very well. What is a cell? So normal production of cell is happen like if one cell is damaged, that new one is produced in the body. But if someone having a cancer, so that particular person in her body or in his body, the cell growth abnormally, फास्टली ग्रो होगा, और ग्रो होने के साथ साथ इट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ अ सेल or a lumps in a body. I'll explain in a later. And that growth of a cell becomes out of control, यानी कि जो सेल की ग्रोथ होंगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, and it causes a cancer. Unlike normal cells, cancer cells continue to grow and divide for whole lives, replicating into more and more harmful cells. Cancerous cells actually a harmful cell, and it grows abnormally and grows whole life, and it is harmful cell. So that डिफाइन दैट हार्मफुल सेल है तो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं और रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल सेल जो ग्रो होता है, तो व्हेन इट बिकम एन अडल्ट द नॉर्मल सेल, और व्हेन इट डिस्ट्रॉय बाय समथिंग लाइक इंजरी हो गई है तो सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो नॉर्मल पर्सन की बॉडी में वो सेल जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद नया सेल फॉर्म हो जाता है. तब तक कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कैंसरस पेशेंट और कैंसर पर्सन की बॉडी में सेल जो है वो हार्मफुल सेल प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली. और हार्मफुल सेल प्रोड्यूस होने के साथ साथ वो नॉर्मल सेल और अच्छे सेल जो रहते हैं बॉडी के उनको भी हार्म कर देते हैं, उनको भी ख़राब कर देते हैं और रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. एक ग्रो होता है उसके बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड दिस हार्मफुल सेल ऑफ अ कैंसर फॉर्म द group or lumps. See here, lumps or group. What it means, when the cancerous cells start growing or reproducing in a body, it form the group or a lumps. Lumps means the गांठ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली गांठ फॉर्म हो जाती है कैंसरस सेल की, एंड दैट गांठ or the lumps is known as a malignant tumor. See here, malignant tumor. So
also said that person have a tumor actually is a गांठ of that particular cancer पर एक कैंसर जो रहता है एक पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर फॉर्म हो जाता है कोई भी बॉडी के ऑर्गन में फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसको ट्यूमर हो चुका है दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ कैंसर ओके अंडरस्टूड नाउ कैंसर ऑकर इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स माउथ टंग स्टमक ब्रेस्ट uterus skin and tissue like and blood also blood happen in any organ of a body और that particular organ में जब वो होता है कैंसर तो we can say it that person having a lung cancer that person having a blood cancer that person having a stomach cancer breast cancer skin cancer we can say because it can be occur in any part of or any organ of a body so this is the definition of a cancer okay so we have seen uh, reason now see the reason of a cancer if you remember that we will see a ad in a tv so many times that smoking is injurious to health that taking tobacco consumption of tobacco is injurious to health so why this ad comes on screen of a tv before starting the serial before starting the movie actually the reason are the these consumption of that tobacco taking gutka these are the main reason of the cancer पर जैसे हम खाते वैसे ही कुछ नहीं होता है गुटखा और टोबैको वगैरह से बट स्लोली स्लोली इट डिक्रीज और इन्फेक्ट द बॉडी ऑर्गन जो टोबैको गुटखा स्मोकिंग रहता है सिगरेट रहता है दीज थिंग्स स्लोली स्लोली affect the body of a person or of the particular organ and after a long time it leads to a cancer maybe it leads to a cancer if our immunity power is very low so consumption of tobacco gutka smoking alcoholism these are the main reason of the cancer then lacking of fiber content fruits vegetables यानी कि वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स का जो कंजम्पशन है जिसमें फाइबर्स होता है वो कम हो जाने खाने के लिए वो कम खाते अगर से तो दैट मे लीड्स टू द कैंसर इन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अ जंक फूड एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा खाने में अगर से जंक फूड हम डेली यूज़ करते हैं डेली जंक फूड खा रहे हैं लाइक पिज़्ज़ा बर्गर so many things drinking cold drinks and all so it leads to a cancer after a long time not suddenly after a long time so this is the reason of a cancer now see the symptoms of a cancer okay one more thing heredity may also be a reason of a cancer you know what is a heredity is a genetic diseases which passed generation to generation so heredity may become the reason if anyone of a family or a ancestor have that cancerous disease so it uh, transfer from generation to the generation mostly the blood cancer is transfer from one generation to the next if it is a hereditary यानी किसी घर में किसी हमारे 2 से 4 लोगों को हो चुका है इन फ्यूचर तो वो इन फ्यूचर किसी को आगे हो सकता है इट कैन बी ट्रांसफर ओके मे बी नॉट मे बी ओके नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ अ कैंसर so if we know the cancer is happened you hear so many times now you learn the reason of a cancer so जब होता है तो they show some symptoms so what are the symptom of a cancer what we will see in a cancer person normally when we see an ad of taking गुटखा और and all जब हम कैंसर की ad आती है कि गुटखा वगैरह खाने से कैंसर हो सकता है तो दे शोज़ द थ्रोट इन्फेक्शन और गांठ इन अ थ्रोट यानी कि हमारे जो गले में दिखाते हैं हमको टीवी के ऊपर के गले में एक लम्स हो चुका है गांठ हो चुकी है तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स वी सी इन अ कैंसरस पेशेंट इफ़ you have seen that kind of patient you will see the gant or that tumor of that particular in a particular area so we will see that person have a throat cancer यानी कि गले का कैंसर माउथ कैंसर so this type of symptom we will see so the specific symptoms are chronic cough
यानी कि लॉन्ग टाइम का वी विल सी इन दैट पेशेंट. Horse wise, if someone have a throat cancer, then it shows a horse wise rough आवाज़. रफ आवाज़ हो जाती है. दैन डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, यानी कि निगलने में. इफ़ समवन हैव अ थ्रोट और माउथ कैंसर, तो उसको निगलने में, सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगा. देन इनएक्यूरेबल स्केयर एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि जलन जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, छाला वगैरह आ जाना. देन लम्स वी विल सी इन अ ब्रेस्ट, चेस्ट में. नॉर्मली इट विल हैपन टू अ women's only. An unexplained weight loss, and slowly that person lost their weight. So this is the symptoms of the cancer. Now we will see the diagnosis or the treatment of a cancer. For the diagnosis or the treatment, we hear so many times the chemotherapy is used because it is an easy and cheapest techniques of a cancerous treatment used in a cancerous treatment. But there are lots of treatments are there, and lots of modern techniques are used in a diagnosis of a cancer. And these are the CT scan, MRI. See here, these are the diagnosis feature of a cancer. These are the CT scan, MRI, mammography are used in a diagnosis of a cancer. Here are so many, mostly we hear the chemotherapy, radiation therapy, and surgery, and also some modern techniques like laparoscopy surgery and robotics. Laparoscopy, chemotherapy, robotics. So these are the treatment or the diagnosis of a patient when the patient came or goes to the visit to a doctor. So it takes some test. Then after that particular after that test, they will say that you have that particular person have a cancer or not. So what are these? CT scan, MRI, mammography, biopsy. What are these treatments? What are the chemotherapy, radiation therapy, surgery, and laparoscopy? Actually, CT scan and MRI. CT scan is used for the brain only. ब्रेन का पूरा कंप्लीट स्टडी के लिए एग्जामिन करते हैं. देन MRI होल बॉडी. मैमोग्राफी जो है नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, चेस्ट का जो कैंसर होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है. देन बायोप्सी में भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, कहाँ हमको दैट डिसीज़ और दैट कैंसरस है, टिश्यूज़ है और सेल है, उसका स्टडी करते हैं. देन chemotherapy means what? Chemotherapy is a used to a chemical drug therapy. Actually mean it is a chemical drug therapy in which it destroy the growth of a rapidly growing cell. यानी कि कीमोथेरापी में एक ड्रग जो रहता है, हमको वो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है केमिकल जैसा, और वो जो रहता है बॉडी को, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल ग्रो हो रहा है रैपिडली, उसको स्लो डाउन कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है. तो दैट इज़ अ chemotherapy. And radiation therapy means what? The radiations are used, और the radiations के थ्रू जो है वो सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है. ओके. एंड नाउ व्हाट इज़ अ लेप्रोस्कोपी हियर? एक्चुअली लेप्रोस्कोपी सर्जरी यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ लेप्रोस्कोप. लेप्रोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसमें, लेप्रोस्कोपी में, टू लुक एट द एब्डोमिनल ऑर्गन. एंड मोस्टली द एब्डोमिनल ऑर्गन, यानी कि एब्डोमिन के अंदर, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर कोई लम्स है, कैंसर का ट्यूमर है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, लेप्रोस्कोप यूज़ करते हैं. एंड वो ऑर्गन को हमारे एब्डोमिन के अंदर जो है उससे एग्जामिन किया जाता है बाय वॉचिंग थ्रू द लेप्रोस्कोप. एंड इनसाइड दैट organ, the abdomen, its low rest minimally,
इन्वेसिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल इंसिजन। और स्मॉल कट किया जाता है बॉडी के पार्ट को, ज़्यादा कट नहीं करते हैं। और वो जो लेप्रोस्कोप रहता है उसके अंदर अंदर का सारा जो है बॉडी के इनसाइड का पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ अ लेप्रोस्कोपी। एंड रोबोटिक सर्जरी मीन्स वॉट? इन कैंसर सर्जरी रोबोटिक टेक्निक इनेबल अ रेडिकल ऑपरेशन to be performed with preservation of a nerve and any other critical structure to better visualization। रोबोटिक सर्जरी में क्या किया जाता है कि जो रेडिकल ऑपरेशन रहता है जिसमें रेडिकल के थ्रू है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे नाजुक बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि नर्व हो गया, ब्रेन हो गया, और जो क्रिटिकल ऑर्गन है उनको कोई हार्म नहीं होता है। और रोबोटिक्स के ज़रिए हम इजीली विजुअल कर सकते हैं, कोई भी बॉडी के ऑर्गन को देख सकते हैं। सो दिस इज़ द डायग्नोसिस फीचर। एंड हियर इज़ अ पिक्चर which explain the cancer day celebrated on a 4th February, the World Cancer Day. So this is all about the cancer. And one more thing I want to tell you, that study of a cancer जो करते हैं that is known as a oncology। oncology, ONCOLOGY, oncology। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ओ Oncology is a study of a cancer, and that doctor which treated the cancer is called as a oncologist. So this is all about the cancer, and today we learn the concept of a non-infectious diseases, also known as a non-communicable diseases, and we have seen the definition and different non-infectious diseases, and we have learned the cancer, its reason, its symptoms, and its diagnosis feature. So this is all about the cancer, and in next lecture we will learn the another non-infectious diseases, and these are the heart disease or the diabetes. So keep study, stay home, stay safe. Allah Hafiz.